You have to send 20,000 rupees cash at someone else's place. Yeah. You don't have a background check of that rider. How will you send it? It's a huge responsibility, भाई. Gig rider is working for 3 to 4 companies. उसका जो डिलीवरी टाइम होगा वो ज्यादा होगा, बट हमारा राइडर सिर्फ हमारी ऐप चला सकता है. अगर कोई और चला रहा है हमारी आईडी ब्लॉक हो जाएगी इंस्टेंट. मैम को कहाँ पता लगेगा? मैं तो यहाँ बैठा हूँ, ग्रेटर नोएडा में बैठा हूँ, बॉम्बे में बैठा हूँ. थोड़ी देर 10 मिनट भी कहीं हॉल्ट कर रहा है, सो वील गेट अ पॉपअप मैसेज. If you have to tell someone what does Riding Rangers do, We have more than 300 plus riders. who are on your payroll. Yes. The benefits of having riders on your payroll versus the large companies who are working with gig workers. It's a very rare scenario where the riders are more and the orders are less. So if you have to tell someone what does Riding Rangers do, Right. what will be your pitch? So Riding Rangers is a customized same-day delivery solution dedicated for businesses. We have a very vast technology which will actually ease out all your delivery operations. So what you want to do is focus on your product and all the logistics is on. And how is that different from, let's say, other delivery logistics solutions available in the So market? let's take an example of Porter or Borzo. They are C2C oriented companies. Fair. They're not B2B2C companies. They are not giving a customized delivery solution. They have a specific funnel, let's say. आपने एक ऑर्डर प्लेस किया, रूटिंग आपको मैनुअली करनी है. उनकी एप्लीकेशन पे जाके आपका ऑर्डर एलोकेशन एक गिग राइडर को है, जिसके लिए यू डोंट हैव एनी बैकग्राउंड चेकअप और समथिंग. बट इन आर केस आप एक कंपनी के साथ टाई अप कर रहे हो. यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट अ राइडर. यू जस्ट हैव टू सेंड दोज ऑर्डर्स. कंपनी इज गोइंग टू मेक दोज रूट्स. आवर टेक्नोलॉजी इज गोइंग टू डू दैट फॉर यू. So everything is, let's say, spoon-feeded to the customers. How did you get your first large client? So that was after a lot of visits, I'll say. Like initially we used to cold email all the customers. Cold calling initially. Cold not even calling and emails. emails also. Yeah. Both. I used to do both. तुम्हें ये भी नहीं पता था. No, in the beginning, I only used to, Fair. call clients. I used to do the BD in the beginning. And Work India पे register करते थे. I used to call those riders that यहाँ पे एक ऐसी XYZ कंपनी है, हम आपको ये ज्वाइन करोगे, ये सैलरी मिलेगी, और उसको हम पूरा मॉडल समझाते थे फ्रॉम स्क्रैच. आज कितने राइडर्स हैं? आज अगर हम राइडर्स देखें थ्रू आउट द कंट्री, वी हैव मोर देन 300 प्लस राइडर्स. Who are on your payroll? Yes. So that's a huge responsibility, भाई. मतलब उन 300 लोगों को मंथ एंड में या उस पे आपको सैलरी देनी है. Before 7th. Before 7, that's the process you have set up. अब irrespective के, मान लो तुम बॉम्बे में भी हो, you are present in how many cities? More than 5 cities. So you have 5 cities. अब वहाँ उसकी डिलीवरी हुई कि नहीं हुई, बिकॉज वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी ना. रिस्पॉन्सिबिलिटी तो तुम्हारी है, वो क्लाइंट्स लाना, वो डिलीवरी लाना. That's a huge risk. Why would you do that? Like this business, how, explain me the benefits of having riders on your payroll versus the large companies who are working with gig workers. क्या pros and cons हैं? So there are many pros and cons. मैं आपको एक चीज बताता हूँ. In Delhi, we are working on a model जिसके अंदर ऑर्डर डिलीवर हुआ नहीं हुआ, we have to think about it. Because यहाँ पे हम हाइक पर लोकल कर रहे हैं. In other states, we are complete doing the dedicated rider model. ठीक है. So fixed clients, fixed stores, fixed number of hours, fixed number of pages. ठीक है. That is fixed. Secondly, how it like makes a difference. आपको अगर एक कोई बोलेगा, let's say in your own company, आप ना पोर्टर से ही ऑर्डर भेज दो. Let's say they are your official documents which are very urgent to you. Secondly, आपको ये बोलेगा कि ये नोन कंपनी है, राइडिंग रेंजर्स का एक फिक्स डेडिकेटेड राइडर आएगा, वो आपसे डिसेंटली लेगा और आपके कस्टमर को जाके बोलेगा फ्रॉम दिस प्लेस आई ब्रॉट योर डॉक्यूमेंट्स, वेयर यू विल फील द सेफ्टी पार्ट. सेकेंडली, दैट गिग राइडर इज वर्किंग फॉर 3 to 4 कंपनीज. उसका जो डिलीवरी टाइम होगा वो ज्यादा होगा. वो एक ही टाइम पे पोर्टर का ऑर्डर भी एक्सेप्ट करेगा, वो एक ही टाइम पे बोर्सो भी एक्सेप्ट करेगा, वो एक ही टाइम पे अंकल डिलीवरी भी Like एक्सेप्ट they करेगा. merge orders. अच्छा. बट हमारा राइडर सिर्फ हमारी ऐप चला सकता है. अगर कोई और चला रहा है हमारी आईडी ब्लॉक हो जाएगी इंस्टेंटली. He can't take any other order. So like the tracking is such that his entire route is being tracked. अगर वो थोड़ी देर 10 मिनट भी कहीं हॉल्ट कर रहा है, so we'll get a pop-up message. This brings to my next question. I'm sure your drivers, your riders, many of them would feel कि यार कर लेता हूँ ना काम, मैम को कहाँ पता लगेगा, मैं तो यहाँ बैठा हूँ, ग्रेटर नोएडा में बैठा हूँ, बॉम्बे में बैठा हूँ. Right. तो how do you, obviously
पेनलाइज करना तो एक बात है, उसको आपने Right. ब्लॉक कर दिया, Right. लेकिन हाउ डू यू मोटिवेट देम, ट्रेन देम, वो कैसे करते हो? Firstly, is that they don't get that much idle time, because as we know that Acha. these are our clients, so these are a minimum number of orders that we'll get. Some days there can happen that there is a little shortage of riders, but it's a very rare scenario where the riders are more and the orders are less. So Right. that is the benefit of why did we do B2B, because we know that there is a consistency of business that is going to happen. Secondly, main part is when we hire our own riders, we have that cash on delivery facility available. Yeah. If you talk about gig workers, you have to send 20,000 rupees cash at someone else's place. Yeah. You don't have a background check of that rider. How will you send it? Yeah, But- that's a big advantage. With our company, we know our riders are police verified. We do get a verification done. We do get their background check done. We do have like where they proper live, training which everything, happens. and training programs are there. At our office place, they have to come. They have to be recruited. They have to. अगर ये सेगमेंट पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो एंड प्रेस करो आई बटन टू वॉच द फुल एपिसोड गाइस, एंड ऑल्सो टू एक्सप्लोर मोर वीडियोस लाइक दिस. इफ यू आर रियली पैशनेट अबाउट स्टूडेंट एंटरप्रेन्योरशिप, प्लीज स्प्रेड द वर्ड. Campus to CEO. Thank you.